हेलो। अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। कुछ लोग आ जाएं तो फिर आई इंट्रोड्यूस यू एंड माई डेफिनेटली। या तो आई हैव बीन लिसनिंग टू यू कि जो है ना, यू आर प्रीटी बिजी पर्सन, और जो है ना आपने और लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना है। सेल्फ। या आई वाज लाइक उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने कहा आई शुड हैव लाइक ही इज आल्सो लाइक अ वेरी बिग इन डिजिटल मार्केटिंग सजा, तो आई शुड हैव लाइक आई शुड डू अ पॉडकास्ट विद हिम। या That's my point of interest as well, digital marketing. और It has रियली grown so या much. Yeah, so it's like getting more and more difficult to keep track of so many different platforms and like so many ways of content creation. यस So my team member who is leading our content creation is like watching this. That's somebody that I would like to like train as a digital marketer. So would love to hear that या session. I think I should have like him because I also don't know about digital marketing. I like a gist of it, but not like the whole of, it's a very big world. And Sajawal Bhai is like the perfect person of it. Uske alawa, let's introduce. My name is Khayyam. I'm a content creator. I do podcast and these kind of things. And Mr. Shuja, he's an educator and he's the founder of the STEM Educators. और ये STEM Educator क्या होती है, किस तरह? It's a very interesting thing. He does very interesting things. Let's ask him what he does and why he does these things. Sir, over to you. Sure. Thank you so much for having me here. What we do at these STEM educators is we give the power of creation to people. Most particularly वो age 6 to 16 के जो students हैं, उनको ये ability देना कि they should be able to create a website, an application, a game, or anything like fun, an animation, a simulation for their own interest. हर चीज जो है किसी कमर्शियल यूज के लिए क्रिएट करना जरूरी नहीं होती। Yeah. वो आपने जो है ना जस्ट फॉर हैविंग फन भी आपने कुछ क्रिएट करना होता है। दैट्स लाइक अ ह्यूमन, दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। So Yeah. we give these power to our students through these courses that we have on topics like programming, robotics, and like programming in multiple stages, जिसमें game development भी आ जाती है, web development भी आ जाती है। So it's like our current focus is on computer science, and that's also such a vast field कि उसी के Exactly. अंदर we're just like consumed so much Yeah. कि सारे courses हमारे अभी उसी के ऊपर focused हैं। So that's what we do. Or generally, what's the age that you are targeting right now? So we do get requests from like a range of like ages. Like वैसे हमारा primary focus age 6 to 16 के लिए, but just today I had a session with a very energetic 4.7-year-old as well, Oh, who was wow. like very excited to yes, who was Yeah. very excited to like solve some puzzles on a platform code.org or typing practice karna. So we can like we do offer learning resources for a very young group as well. And currently our oldest student is a 44-year-old, Oh, wow. a mother. Yes. So the story goes like this, कि if I may like extend this a little bit, कि उनके दोनों बच्चे जो है ना हमसे कोर्सेज ले रहे थे, एंड देन शी गोज लाइक कि मुझे भी सीखनी है प्रोग्रामिंग। सो शी आल्सो स्टार्टेड टेकिंग कोर्सेज विद अस। सो लेकिन प्राइमरी फोकस ए 6 to 16 के लिए है, बट वी कैन ऑफर लर्निंग रिसोर्सेज और लाइक जनरली आवर एडवाइस टू एनी पर्सन हु वांट्स टू That गेट स्टार्टेड विद दिस। इससे ना मुझे एक और चीज, अभी आपने जो ये वाली कहानी सुनाई है ना, यूजली समर ब्रेक से पहले है ना, समर ब्रेक से पहले मुझे बहुत से वालिदैन के मैसेज आते हैं कि क्या आप हमारे बच्चों को वीडियो एडिटिंग एनिमेशन सिखा सकते हैं? बट बिकॉज आई एम नॉट लाइक मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को सिखाने का तरीका डिफरेंट होता है, से डिफरेंट है, तो आई नॉट लाइक जनरली डू दैट। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक आई थिंक मैंने शायद पहला कोर्स है जिसके बारे में सुना है, जो कि हो रहा है। ओके। So you have like a program as well, which is in partnership with entrepreneurship, a center for entrepreneurship. So like, what's that? It's the summer program. Like, what's that? Like, share some details about that. Sure.
During summers we have a lot more time to like conduct these classes on a daily basis, जो कि otherwise काफी longer track होते हैं. Our courses are on the structure of having 4 months long and with classes twice a week because we have to ensure capacity building. But then during summers हम वो classes like on a daily basis conduct कर सकते हैं and in person होती हैं in an environment like LUMS. तो वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फर्दर इन्हांस्ड होता है. एंड वी कंप्लीट दीज कोर्सेज इन अ 1 month ट्रैक जो कि इस साल अभी जुलाई के अंदर रन होगा. दिस इज द लास्ट वीक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इट. So in this 1 month, kids will like acquire skills like creating a website and creating simulations or animations in tic-tac-toe type of or minesweeper type of games on Python. And there's obviously a very beginner level as well with a tool called Scratch. Our level 1 is being offered over there, and then the game development program with Unity. So we have been doing this partnership for about this is our third year with LUMS, and it has like run successfully so far. And this year also, me as an educator, I'm looking forward to this case. The कौन से नए students आते हैं that like we get to interact with. इंटरेस्टिंग से लम्स के अंदर तो बहुत ज्यादा वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो लाइक हाउ डू वी नो कि इट्स लाइक योर्स और जनरली हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स. Okay, yes, that is a thing. Like I recently started swimming on the campus as well. तो मैं वहाँ पे देखता हूँ वहाँ पे एक swimming camp भी चल रहा होता है. And LUMS का अपना day care भी है. And then there's a summer school at LUMS. And then there's CESS LUMS. And then there is LUMS Center for Entrepreneurship. So ours is in collaboration with LUMS Center for Entrepreneurship. You can like always find the details on our Instagram page or maybe like on our website. So people can always like very easily reach out to us through our WhatsApp numbers. We like to talk to clients. We like to like hear their feedback a lot. So WhatsApp पे reach out करना is the best option probably. Instagram के through भी like the team does respond to it, but it makes a better experience when we get to like talk to the person. Yeah, there is a thing that you guys do. This like an exploration session, I guess. But what's that? Why you do that, and what's that? Basically. So in this ecosystem, I've seen कि like there are a lot of courses जो कि offer होते हैं simply because of based on somebody's age. कि age 11 and above के लिए ये particular course होगा, age like 7 and above के लिए ये particular course होगा. But that doesn't like help that much. And this is also something that we found out from our clients. Some experiences like कि हमने अपने बच्चे को इस summer program में enroll किया, but it wasn't like that challenging for my son क्योंकि उसने already उस तरह की कोई चीज पहले की हुई थी. So we prefer to like only enroll in a program that would be most beneficial for the student. So that's why we conduct this exploratory session. It's a STEM Explorer session. It serves like a pre-assessment session for us so that we can find out if a student is ready for a particular stage or like which stage is most suitable for the child. So we like go through some activities on different platforms and we do this discussion around computer science concepts to find out कि student का prior exposure क्या है, understanding क्या है in topics से related, and then we give a follow-up call to the parents कि based on the pre-assessment, this is the path that the student should take. So I think that helps us narrow this down कि अगर एक parent अब इतना ज़्यादा amount और time consume कर रहा है for their kids education, तो वो उसी कोर्स में करे जो कि उनके बच्चों के लिए most beneficial होगा. और जनरली जब लाइक जब इन एक्सप्लोरेशन सेशंस के बाद लाइक ऐसा होता है कि कोई बच्चा चाहता है कि वो ये करना चाहे, लाइक कोई डिफरेंट कोर्स करना चाहे, बट यू रेकमेंड कि इसको बेहतर ही होगा कि वो यहाँ से स्टार्ट करे तब वहां पे जाना. Yes, इस तरह के scenarios obviously निकलते हैं when we like get to meet such a student जिसको बहुत ज़्यादा exposure मिला हुआ है with these concepts, लेकिन वो exposure level का है and it's not really based on like capacity building experience. कि student को खुद से empower नहीं किया गया to be able to do something on their own, लेकिन उनको दिखाया बहुत कुछ गया है कि भाई दिस इज समथिंग दैट्स डन थ्रू आर्डुइनो, दिस इज समथिंग दैट्स डन थ्रू यूनिटी. सो वो एक्साइटमेंट में ना कभी कभार वो सेल्फ असेसमेंट बच्चों की अच्छी नहीं भी होती, लेकिन समटाइम्स दे लाइक
come up, and majority of the times they have a right idea of this thing कि हम उनको भी choice देते हैं ना कि what do you think is the right stage for you, so they get a right idea कि मुझे maybe scratch level 2 पे जाना चाहिए before choosing something like Yeah, Python. very interesting. मेरे ज़हन में बड़ा अच्छा सवाल आया था, उससे पहले आई वांट टू एड्रेस ये भाई नीचे कमेंट कर रहे हैं ताहा ताहा मुझे डीएम करते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड आपको. बाकी if anyone has any questions, you guys can add in the question section and we'll add. So Majority of the times the type of questions that we get is कि इसकी course outline please share do you guys outline? Yeah, it's like a practical. Uh, yes, there is obviously. I mean, जो ज़्यादा detailed structure होता है, जो उसका breakdown होता है, that would be like a bit too technical. तो वो जो है, हम obviously website पे नहीं डाल सकते. It would be too complex for anybody Yeah, to understand. लेकिन एक basic outline obviously हर course की होती है. And the people, जैसे कि अभी हमारे जो है ना एक community leader ने join किया है, Mr. Pashan ने, he is somebody जो कि बहुत heavily invest करते हैं अपना टाइम भी और अपना अपना फाइनेंस भी इन देयर किड्स एजुकेशन. सो हमने उनके साथ भी इस तरह की कई कन्वर्सेशंस की हैं. तो उनकी भी एडवाइस यही है कि अगर कोई एजुकेशन प्रोवाइडर जो है ना उनका उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ तो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रेड फ्लैग कि जो है ना आप उसके पास ना जाएं. बट वी हैव लाइक ऑल द कोर्स आउटलाइंस ऑन आवर वेबसाइट. एक जो 4 months का ट्रैक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वहाँ पे पता चल जाता है. एंड देन दी स्टेम एक्सप्लोरर सेशन दैट हेल्प्स क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि किसी भी एक yeah, पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या किया जाएगा. very interesting. मुझे एक चीज बताएं कि जो बच्चे लेट्स से 1 महीने के लिए आते हैं, उनके पास लेट्स से आपने उनको अपनी तरफ से यू थिंक यार दिस he can for example do the python wala course, I can do the coding wala kuch Hmm. koi bhi cheez. Don't you think like these things are a bit complex, for example to try to Hmm. teach like a very young kid, तो उसके अंदर like Hmm. क्या So I'm yeah, just curious. I think definitely from an outsider's perspective, when I didn't know programming first, I got to like have the first experience of programming during my university time. लेकिन उसमें भी जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था जिसका नाम स्क्रैच है, इट्स नाउ प्रीटी वेल नोन इन द एजुकेशन सेक्टर. वो डिजाइन किया गया है बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए. अगर हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि इट्स आइडियल फॉर एज 8 to 16, Oh, wow. जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर यूज किया जा रहा होता है टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम लेवल ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो देर आर टूल्स जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर डिजाइन हुए हुए ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट, दिस लाइक टॉपिक, दिस सब्जेक्ट टू वेरी यंग किड्स इन द K-12 सेगमेंट्स. एज 6, इवन एज 4 के लिए भी जो कोड डॉट ऑर्ग का प्री रीडर्स एक्सप्रेस का एक कोर्स है, Oh, wow. जो कि एक पजल बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर जो है ना बेस्ड है. So that's a very good introduction to computer science. So anybody can like get started with this. You just have to have the, you could say maybe the guts to take the exploratory session, just STEM explorer session, Yeah, and I think उसके बाद काफी चीजें clear हो जाएंगी once you take that. very interesting, very interesting. I think I would like to ask you a bit like personally, like why are you interested in STEM? Mm-hmm. So it started out something on a different note. कि I was a part of the first academic makerspace in Pakistan जो अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में थी, ITU यूनिवर्सिटी में लाहौर में. And the type of learning environment that I saw in that makers space, that was very freeing. That was much more effective. Much it gave a lot more ownership to me as a learner कि मैं क्या learn करना चाहता हूँ. And there was an element of finding a community of like-minded individuals over there. So I started as a volunteer over there, and when I wanted to do more with that, कि हर स्कूल में इस तरह की मेकर स्पेस होनी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर पब्लिक प्लेस लाइक अ लाइब्रेरी के अंदर, लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक मेकर स्पेस होनी चाहिए, मे बी आपके घर के अंदर एक मेकर स्पेस होनी चाहिए. सो व्हेन आई वांटेड टू डू मोर विद दैट, that's when this like startup came into being.
Later down the road, we like kept on doing research के early childhood education में क्या हो रहा है. We kept on reading research. तो उसमें we found out कि computational thinking is emerging as a next universal basic skill. जिस तरह से पहले रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक हर इंडिविजुअल की नीड था, उसी तरह से कंप्यूटेशनल थिंकिंग आज के दौर में हर इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है. सो Yeah, दैट्स हाउ वी गॉट टू आवर करंट स्टेज. बट मेरी मोटिवेशन यही थी कि वो जो मेकर कल्चर है उसको मैं फैलाऊं, बिकॉज इफ आई हैड हैड समथिंग लाइक दैट एट माय स्कूल, तो इट वुड हैव लाइक मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय एजुकेशन, माय अर्ली स्कूलिंग yeah. एजुकेशन. I think generally we all in our like general education cycle जो हमारा होता है 16 years वाला, उसके अंदर we get to introduced to all of these concepts very late. For example, Very late. class in 8th class, I remember I like studied from like a local school, a national academy. Mm-hmm. The one teacher जो computer पढ़ा रही थी, he came to us. He was like, computer is very important in life. These things you have computer ये वो. And I was very excited. I was like, yes, I'll do the computer science. Mm-hmm. And the next teacher, she came in. She is the bio teacher. She was like, computer के बारे में तो हर किसी को पता होता है. I should do a different thing. I should do bio. Yes, I'll do the bio. I studied bio. I ended up studying bio. The person who was always interested in computers and games and these kind of things. And then in first year, after the matric examination, I was like, what should I choose now? I was like, oh, everybody's saying pre-engineering is hard. I should do pre-engineering. I chose pre-engineering. I did 1 year. Like, what should I do other than pre-engineering? I left the pre-engineering and I started diploma in associate engineering. So I did. Mm-hmm. I have like a background in engineering, which I'm not like very proud of because I haven't pursued that part. Mm, But yeah, that is very interesting. So the STEM education actually introduced you to all of these things very early. I get to introduce to like animation and these side in 2020 when I was mm, 20. It's a bit I get mm. to Yeah. introduce We've something. we've done something like this, like Instagram live session na, with one of our students who has been our learning facilitator as well. So हमारे जो senior students होते हैं who've taken multiple courses with us, we invite them to become a part of our team and help us like teach others. तो उससे उनकी learning reinforce भी होती है, उनको एक community में contribute करने वाला element भी introduce किया जाता है. So we invited that student to like be a part of this session and asked him, okay, when did you first get an introduction to programming? And he was like, so I got to do like my first Scratch project at age 11, which I also think was pretty late. So there are these students who are thinking that age 8 भी काफी late, which is in like in some way pretty late for the Yeah. next generation. Because we've had students जो कि 8 year olds हैं, जो कि Python programming जिन्होंने हमारे साथ की है, and the same Python course जो है वो currently एक 18 year old, एक 16 year old, एक 14 year old वो लोग भी ले रहे हैं, because based on the pre-assessment वो उस stage पे fall करते हैं. So it's rather like less based on कि आप किस age में start करते हो. If you want to get started with us, so the pre-assessment session will help you find the right starting point for you. Yeah, that's very interesting. And Yeah. still like at age 11 भी अगर आपको introduction मिल रहा है to coding, so that's also like still a good thing. You can still start now. Yeah, my youngest brother, he was like very interested in like generally technology, computer. जो भी चीज़ I was like I want to try this, try that. So I didn't knew anything, like मुझे कुछ बेहतर पता नहीं था. So what I did was I think when he was 12 or 13 years old, I gave him my computer. It was like to like play games and explore games. So when he started playing games, he was like, I told him to add different elements in the game. So he started exploring कैसे मैं उसके ना games क्योंकि he was interested. मेरा ये incentive कुछ कंप्यूटर के अंदर सीख लेगा और उसका इंटरेस्ट इंसेंटिव था कि वो गेम्स खेला था और उसको उसमें एक्सप्लोरेशन थी. Yeah. So starting point for him, and now he's like he started making content. He does animation as well. He does editing as well. He's 16 years old. The 4-year-old journey उसको यहाँ पर ले आया जहाँ जो कि I think I started in 2021 when and जहाँ पर अभी मैं हूँ almost he know a lot of basic things already. So yeah, it's very important. That, बहुत जल्दी that's अब बच्चों को introduce.
that's the advantage जो कि younger siblings को मिलता है Yeah. Yeah. based on having somebody like you in the session. Though I would like to add, maybe when you made that switch na from computer science to bio, maybe you missed out on like a career track that could have landed you in a big tech company, because currently जो आसपास देखने को मिल रहा है, आई मीन यू नो द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, Yeah. सो जो टेक कंपनीज में स्पेशली फॉरेन टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। तो Yeah. उनकी एक लाइफस्टाइल है जो कि जो है ना इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। उनको डॉलर की प्राइस इंक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको उल्टा और फायदा हो I रहा got it. है। Yeah, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा Yeah, I agree. I agree. I think maybe I missed, but because now I am a freelancer, I make है। an application, so I या am still, somewhat earning in dollars type of thing. But yeah, या I agree. हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं। आई मीन लाइक आई वांट टू बी एन एजुकेटर इवन दो आई रियली लाइक कोडिंग, लेकिन करंटली जो मेरा ट्रैक है कि आई वांट टू रीड मोर रिसर्च ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो वी डू दिस अदर थिंग कि एक स्टेम एड डिस्कशन ग्रुप होता है, जो कि हम हर थर्सडे को एक लाइव मीटिंग करते हैं वेयर वी रीड अ न्यू रिसर्च पेपर अराउंड दिस टॉपिक। सो वो एक ओपन सेशन है विद लाइक आवर टीचर्स, और बाहर से भी एजुकेटर्स आ सकते हैं उसको ज्वाइन करने। इट्स अ वेरी लाइक नीश थिंग कि आप कोई रिसर्च पेपर स्टडी करने के लिए आप एक मीटिंग ज्वाइन करो ऑन अ वीकली बेसिस, बट दैट समथिंग दैट वी फेल्ट लाइक कि वो हमारे टीचर्स के लिए जो है ना बहुत ही हेल्पफुल था इन इम्प्रूविंग देयर स्किल सेट, इन अंडरस्टैंडिंग के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो है ना क्या हो रहा है। तो या दैट्स समथिंग दैट वी डिड। Very interesting. एक चीज आप मुझे बताएं in terms of content creation. So I like, so because जैसा मैंने अभी बताया, I have exposure बहुत late on all of the latest things. So what I did is कि I was like कि अगर इतनी कम information मुझे मिल रही है और मैं इतना fast और मैं क्योंकि मैं interested हूँ उस चीज के अंदर, तो I should also try to give uh, some information back ताकि जो नहीं वो चीज मैं available कर सकूँ. So I dedicated literally my Instagram, my YouTube on the main goal is education, and then I do a lot of random things as well. So my question is कि a lot of people like complain कि यार ये वाला जो content है ना, it's not very uh, entertaining enough to educate. और मेरा थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, मुझे ये लगता है कि क्योंकि हर इंसान एंटरटेनर तो है नहीं और हर एंटरटेनर भी है नहीं, तो डू यू थिंक like we should understand by now कि we should start from somewhere, we have to learn from the teachers we have to then eventually evolve and become like entertainers slash educators. About या तो आई थिंक डेफिनेटली एक उसमें एलिमेंट तो ये जरूर होना चाहिए कि आप कितना इंगेज कर पा रहे हो ऑब्जर्वर को। वो बेशक आप इस तरह के कंटेंट की बात कर रहे हो, या फिर वैसे इफ यू कैन मे बी एड सम क्लैरिटी, आर यू टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो क्लास के अंदर होता है, या फिर जो हम एजुकेशनल कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं? या वीडियोस के अंदर या जनरली आप यूट्यूब Wait, पे ट्रेनर और ये these kind of videos. yeah. अच्छा, so there are some like really good educational channels out there. एक Veritasium है, वो मेरा favorite channel है। फिर Mark Rober, the former NASA Oh scientist yeah, जो है ये, he's like brilliant. Yeah, he's या तो इस तरह के जो है ना हम रिसोर्सेज, ये भी आप कह लो दीज आर गुड एजुकेशनल रिसोर्सेज, बिकॉज रादर देन आप कह लो गोइंग टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक आप कह लो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, आप इनमें यू कैन फाइंड समथिंग एजुकेशनल एंड दे डू इट इन अ वे कि इट कैन कीप यू इंटरेस्टेड। के हैक स्मिथ एक जो है ना यूट्यूब चैनल है, दे हैव मेड सॉर्ट ऑफ लाइक एवरी अवेंजर्स जो उनका प्रॉप होता है ना, कि थॉर का हैमर भी बनाया हुआ है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी बनाई हुई है, एंड द इंजीनियरिंग बिहाइंड इट। सो देर आर वेज कि आप जो है एक काफी टेक्निकल काफी कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक सिंपलर फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड आई थिंक ऑन सम पार्ट it is the job of a content creator like you, and on some part it is the job of a educator like me कि हमने भी एक complex idea को एक simpler form में जो है ना हमने communicate करना है। because like I don't think there's any need to use jargons और बात को जो है ना overly complicated कर दी जाए।
आई थिंक साउंड वर्ड जो है ना वो इस कम्युनिटी में यूज इस तरह से भी किया जाता है कि जो है ना अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए Yeah. कि so, लेकिन बात को अगर आप सिंपलर वे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक सोचने का तरीका है। इट इज नॉट दिस कि आप जो है प्रिंट का फंक्शन लिखोगे तो समथिंग विल लाइक शो अप ऑन द Yeah. स्क्रीन। इट इज दैट थिंग कि हाउ डिड यू फाइंड कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो है ना प्रिंट का कमांड ऐसे लिखा Yeah. जाता है। इट्स फाइंडिंग आउट दैट सोल्यूशन। सो देर आर लाइक सो मेनी लाइक डिफरेंट थिंग्स अराउंड दिस। वो एक एजुकेटर को पता होनी चाहिए कि हाउ कैन यू लाइक कम्युनिकेट द सेम आइडिया मे बी इन मल्टीपल लैंग्वेज, मे बी Yeah. इन मल्टीपल phrases. So, well, that's the job of an educator. Yeah, very interesting. लाइक कभी कोई आपने ऐसी चीज देखी है इंटरेस्टिंग जो आपने कोई किसी बच्चे ने की हो उन्हीं क्लासेस के अंदर और आपने बोला वाह ये ये किस तरह की ऐसा Many times that happens so often. I और mean, so yeah, exactly. So one of our students, I got to know कि ये कोई IoT जो है ना वर्कशॉप हो रही है लम्स के अंदर ही। तो it was for undergrad students and I knew कि ये जो हमारा particular student है he would benefit a lot from this workshop. तो मैंने पेरेंट को इंट्रोड्यूस कराया कि ये फ्री वर्कशॉप है आके जरूर अटेंड करें। And I knew that child would do like very well in that workshop. He was an 8-year-old at that time. But when I got to like go there and see कि जो है ना वर्कशॉप में क्या हो रहा है, जो वर्कशॉप कंडक्ट करवा रही है जो लड़की अंडरग्रेड स्टूडेंट, वो कहती है कि सो हु इज डन विद दैट पार्ट, द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी। हर किसी के जो है ना हाथ नीचे हैं और जो मेरा स्टूडेंट है उसके जो है ना हाथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। आई एम ब्लोन अवे कि भाई ये अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर बैठ के ही इज डन विद दैट पार्ट, और वो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स जो है ना वो सो मेनी टाइम्स दे क्रिएट दीज अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के जो है ना आई एम ब्लोन अवे कि ये क्या कर रहे हैं। एंड उनके हमने कुछ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, सो इफ पीपल वांट तो दे कैन लाइक गो एंड सी या दैट। श्योर I think I'll take some names from you of the YouTube channels, including yours, हम्म ताकि when I'll post like we'll post this video, so I can add the हम्म link to that too. हम्म हाँ, ये जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है ना दीज आर रियली हेल्पफुल इन इंस्पायरिंग द किड्स Yeah, के साइंस को यूटिलाइज करके हाउ यू कैन लाइक एक्सप्लोर के व्हाट इज द वर्ल्ड अराउंड यू। सो उसमें अगेन आई वुड कोट वेरिटासियम और जो है मार्क रोबर का जो चैनल है, और हैकस्मिथ, और सिमोन गर्ट्स इज अ रियली गुड मेकर। फिर एडम स्मिथ है, yeah. एडम सैवेज आई थिंक। So there are so many of these. So definitely do share these, and if anything else comes to my mind, so I would also share those names Of with you. course, that would be amazing. One last thing that I just forgot. What it was about That's maths. So generally, because time is like also mathematics as well, science, technology, engineering, and mathematics, right? अभी मैंने याद किया. तो जो मैथ्स है, a lot of times like बच्चे बोलते होते हैं कि हाँ जी a+b² का फार्मूला कभी जिंदगी में काम आया. हाँ, तो मैं कहता था यार अब तो दोस्ती कर रहा है वैसे, मतलब प्लस माइनस तो चलो आ गया, ये नहीं yeah. फिर अभी तक 24 साल का मैं हो गया हूँ, मेरे जो 15 साल उनके भी काम नहीं आया. तो जनरली how do you think this engineering, the again it's a problem solving mindset, this helps in life, practical life? Because like again ऐसे तो नहीं होगा कि आप बैठे होगे आप बोलोगे अच्छा यार अगर मैं इस करूंगा और फिर ये होगा, but you still use all these principles in your life. So how generally you think these principles in your life? So it's a very valid question, जो कि I think it's a great thing कि kids ask this कि भाई ये मैंने अपनी लाइफ में कहाँ यूज करना है। So इस क्वेश्चन को एटलीस्ट शन नहीं करना चाहिए, Yeah, इसको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। तो वो ये है कि वेरी सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी जो है ना वो भी बड़ी अमेजिंग क्रिएशंस के अंदर यूज किए जा सकते हैं। लाइक आपने गूगल क्रोम के ऊपर जो है ना वो टीरेक्स रन वाली गेम खेली होगी, जब भी कोई जो है ना शार्क ने हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल काट दी हो और इंटरनेट ना चल रहा हो, तो उस पे जब आप जंप करते हो तो व्हेन यू क्रॉस 100
तो एक स्पेशल साउंड आती है, व्हेन यू Yeah. क्रॉस 200 तो एक स्पेशल साउंड आती है, तो वो 100 के किसी भी मल्टीपल के ऊपर एक स्पेशल साउंड आती है। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग दैट, तो वहां पे मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होता है मॉड का, जो कि किसी नंबर से डिवीजन के बाद ना उसका रिमाइंडर दे देता है। आई नो कि ये थोड़ी सी टेक्निकल होती जा रही है कन्वर्सेशन, बट टू ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, कि an operator, a mathematical operator as simple as division, इस तरह की एक डाइनो रन की गेम क्रिएट करने के अंदर यूज होता है। एंड दैट्स समथिंग दैट मिलियंस ऑफ पीपल प्ले अराउंड द वर्ल्ड, और उनको दे फाइंड हैप्पीनेस इन इट, दे लाइक एंजॉय प्लेइंग दैट गेम। Yeah. फिर फ्लैपी बर्ड जैसी गेम क्रिएट करते हैं तो उसमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो उसमें भी काफी सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज हो रहे होते हैं। सो इफ वी कीप ऑन गोइंग टू सम हायर स्टेजेस, तो फिर मे बी जो है ना हम लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला तक भी पहुंच जाएंगे कि हमने किसी चीज को कैसे सॉल्व करना है। तो करंटली जो हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है, दैट इज द पाइथन लेवल 2, जिसके अंदर हम बच्चों को पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स जैसी चीजें जो है ना सिखाते हैं कि एक मेज के अंदर हाउ कैन अ प्रोग्राम फाइंड अ पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ऑन इट्स ओन। तो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेज जो कि बच्चों को एल्गोरिथम्स, एडवांस एल्गोरिथम्स तक जो है ना इंट्रोडक्शन देती है। सो वी आर गेटिंग देयर। कभी ना कभी जो है ना शायद मेरे इंस्टाग्राम पे आप ये आंसर सुन लें कि ए प्लस बी स्क्वायर इस प्रोग्राम में यूज हो रहा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं तो जनरली इसको इसी तरीके से देखता हूँ। आई वंस वेंट टू द गो कार्टिंग कार्टिंग हम्म तो जब when I said when the first round I was like very confused because मेरी पहली बार थी और मुझसे हो भी नहीं रही थी। बट ऑन द सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड पे मैंने कुछ चीजें एनालाइज की, सेकंड राउंड पे आई वाज लाइक अच्छा मैं अगली बार टर्न इस तरह लूंगा, और अगर इस तरह लूंगा हम्म तेज हो जाएगी। But after that, like the whole 2-3 sessions, I was sitting down and I literally felt कि मैंने हमेशा ये सोचा कि फिजिक्स मेरी जिंदगी में कहाँ काम आएगी। Like literally, physics principles right now in हम्म like literally this is यस what physics is. हम्म सब oh yeah, so when अब जब मुझे लोग कहते हैं ना, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई लाइक यहीं पे काम आएंगे जिंदगी में, अभी नहीं आए तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे। But it's better यस uh, have the exposure again to these things in हम्म very of starting at the age of 25 or 26, which is not like कोई मसला नहीं है उसमें, but still हम्म like understanding in early stages of your life. हम्म हाँ, अब तो एजुकेशन जो है ना वो स्कूलिंग सिस्टम से, स्कूलिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम से बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो चुकी हुई है। वी नीड टू लाइक गेट अवे फ्रॉम दिस आइडिया कि एजुकेशन सिर्फ उसी बिल्डिंग में ही कंटेन्ड है। Yeah, देर आर सो मेनी एजुकेशनल रिसोर्सेज आउटसाइड। हर तरह का जो है ना कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू लाइक लुक फॉर द राइट रिसोर्सेज। सो दैट्स वाई वी ऑल्सो हैव दिस कम्युनिटी ग्रुप, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक आता है। कोई पॉलिटिकल चीज आती है, वी किक आउट अ पर्सन विदाउट इवन अ वार्निंग। So the link for that is in our bio if anybody would like to be a part of that community, क्योंकि वहां पे there are, WhatsApp. it's a WhatsApp community group, yes। हाँ, WhatsApp पे ज्यादा एक्टिव रहता है, इट्स Facebook group as well, लेकिन WhatsApp पे ज्यादा आप Yeah, एक्टिव कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो इट्स वेरी नीटली मेंटेन्ड। मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि हमारे कई क्लाइंट्स को हमने एडमिन बना दिए, और उनको भी जो है ना पता है कि भाई यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड ही कुछ होना है। कभी मैं भी अगर अवेलेबल नहीं होता ना, वो एक पोस्ट डिलीट कर देते हैं और बंदे को निकाल देते हैं अगर कोई इरेलीवेंट चीज that's आती very powerful. Yeah, building a community, it's like very powerful thing. I really admire people who can build community because like it takes a lot of effort, it takes a lot of moderation, it takes a lot of time. If you are working like literally एक काम करना है, it's just one thing, उस काम को manage करना is one thing, then building a community, है। these all of these things Totally different। like this is very good. I like very amazing. So yeah, if there are any closing remarks, नहीं, आई डेफिनेटली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन अ लॉट। हमारी जो इससे पहले भी बात हो रही थी उसकी बेसिस पे भी आई वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन फर्दर विद यू। मे बी यू शुड आल्सो टेक अ स्टेम एक्सप्लोरर सेशन, सो जो है yeah. you'll also get a better idea कि जो I है ना if you want to should do start, that session live basically. maybe Yeah. yes। So
many times अगर पेरेंट्स हमें कोई मेडिकल फील्ड से है ना या फिर कोई किसी लाइक लॉ फील्ड से है रियल एस्टेट से है सो देर लाइक के मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से नहीं हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि जो है ना इसमें क्या होगा वो लाइक के हम पेरेंट्स के साथ भी इस टाइम एक्सप्लोर सेशन करते हैं एंड विद जस्ट लाइक दैट 30 minute सेशन यू विल ऑल्सो बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर किड कि आपको जो है कौन सा लर्निंग प्रोग्राम अपने बच्चे के लिए चूज करना है and on the other hand like find the community like link in our bio be a part of that community and ask anything related to education वो welcome है वहाँ पे would love to have more people in that community Of course. Last question. Why do you guys spend like invest so much time in educating people before in what in sorry what in like educating or analyzing people before even before the uh, hmm course? Yeah. before Like just enrollment do yes digital exactly marketing. Tell people कि सिखाओ बच्चों को समर कैम्प में बच्चे तो आ ही जाएंगे. हाँ सो आई थिंक देखें हमारा जो एंड गोल है वो है बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस फाइंड आउट करना तो दैट वुड वर्क बेटर अगर पेरेंट्स भी ज्यादा अवेयर होंगे कि एक क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्स क्या है तो वी वांट पेरेंट्स टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड quite honestly I've seen a lot of misguided जो है ना advertisement as well around these things every year we see like so many new organizations pop up जो कि सिर्फ summers में अपने program करवाते हैं and then they like close up shop in September or August and they don't like develop that maturity of how to carry out education so education is I would say a sacred profession here you're like nurturing mindsets in the of the next generation so it has to be dealt with in a serious manner so we have sort of acquired that maturity over the past 5 years of like working in this field and we think it would definitely benefit us in the end agar hamare clients bhi zyada educated honge because like we don't compromise on the quality of our educational program so we know ke jo hai na when they'll know ke agar unhone quality pe compromise nahi karna they can compromise on like timing and some schedule and like pricing type of thing लेकिन क्वालिटी जो है ना is something that they must uphold at the highest level तो फिर they will come back to us so there is a sustainable you could say mindset as well कि इसको sustainable way में carry out करना not just this के सिर्फ summers में run करना है but we want to build a system that would last beyond me beyond my current team members beyond you and it would like benefit the next generations for the many generations Yeah, that is very true. That is very true. If you have like the goal is to educate people, you have to invest time. If you don't want to invest time, then like don't complain about anything. Yeah. I think it was very nice talking to you and learned a lot of things as well. It was a wonderful conversation to have with you and would love to have such a conversation again. Maybe आप कभी जो है ना दोबारा हमारे साइड पे हैं और जो है ना then be a part of that हाँ, जरूर. podcast and share your digital marketing and your content creation experience because people are like asking us more and more about that. So would love to have that conversation again. I personally also think that I'm like really focused right now nowadays on responsibly content creating and content consuming. So right, I'm trying to understand all of these things so that I can teach as well. But I'm documenting. So yeah, thank you so very much for coming. Thank you for having me. Thank you so much. Take care. Hafiz. Office.